सेठू देखा जीवो तो एठी गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी एंड कांग्रेचुलेशन समस्त को जो मानकर एलटीआर प्रीलिम्स क्लियर हो जाइए बहुत सीबीजेड एंड पीसीएम स्टूडेंट आज आज आम केमिस्ट्री क्लास रे डिस्कशन करवा केमिस्ट्री बिफोर डिस्कशन आम जाना कौन ना आपण मानकर जो एलटीआर एग्जाम रे प्रीवियसली जो आरएसटी एग्जाम होती आरएसटी एग्जाम रे बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रू बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रू तुम क्वेश्चंस आरएसटी रे प्रोबेबली आरएसटी रे क्वेश्चन केते आछि पीसीएम पिलांग पय बेसिकली पीसीएम पिलांग पय बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चंस तुमरो आछि 10 to 11 क्वेश्चन बट आउ सीबीजेड पिलांकर पय तुमरो क्वेश्चंस केते आछि ना 7 क्वेश्चंस आछि ओनली फॉर केमिस्ट्री क्वेश्चन कि तुमरो एबे जो एलटीआर मेन्स एग्जाम हम एलटीआर मेन्स एग्जाम रे केमिस्ट्री केते क्वेश्चन आसीबो टोटल 40 क्वेश्चन 40 टा क्वेश्चन तो हमरो टारगेट समस्त को रहइबो एबे कोन ना टोटल 40 टा क्वेश्चन रु हमें मिनिमम हमें क्लिप करिया दरकार कोन 30 to 35 टा क्वेश्चन बुझियला आमे जो क्वेश्चंस गुडा को करबा प्रीवियस टॉपिक्स को रिलेटेड नै कि जोडा को ऑलरेडी एग्जाम हेई जाईची आरएचटी हो रेगुलर हाई स्कूल टीचर जोडा कि हेगला कि अदर एग्जाम गुडा को जहाँ भी हो जाए तार क्वेश्चंस को टारगेट करिकी आमे एलटीआर मेन्स पे टारगेट करवा आम टारगेट रहइबो एलटीआर मेन्स रे बहुत पीसीएम सीबीजेड स्टूडेंट मानकर सजेशन मिनिमम तमे टारगेट करो केतेटा क्वेश्चंस 32 to 35 क्वेश्चन टारगेट करबे आउट ऑफ 40 बुझिला तो जीवा आमे आज टॉपिक को आगो जीवा देखिबा क्वेश्चंस कोन अछि ओके फर्स्ट टॉपिक रे आपनकर बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे आमे आज पढिबा कोन आगो एटॉमिक फर्स्ट इज कौन पढ़ा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड इक्विवेलेंट मासेस another is what mole concept is the most important topic बुझिल तो चलो आम जीवा आज डिस्कशन करवा एटॉमिक मासेस कौन मॉलिक्यूलर मासेस कौन एंड इक्विवेलेंट मासेस कौन बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस ऑन व्हाट मीन बाय एटम फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट मीन बाय एटम एटम इज व्हाट एटम इज द smallest particle of an element smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction which can take part in a what chemical reaction clear chemical reaction clear समझते एंड एटम फर्स्ट एटम हमें क्लियर होले एटम रे हमें डिस्कस करिवा एबे कोन ना एटॉमिक मास व्हाट इन बाय एटॉमिक मास वी कैन से व्हाट इन बाय एटॉमिक मास मींस मास ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन व्हाट सिंगल एटम मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ओवन व्हाट सिंगल एटम गोटे सिंगल एटम रो मास को हमें कोन कहै जिवो एटॉमिक मास बुझिहल तो फॉर एग्जांपल आम नहीं कौन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर व्हाट 8 एटॉमिक मास केते हो 16 बुझिहल तो सल्फर एटॉमिक नंबर इज व्हाट 16 एटॉमिक मास केते हो 32 so these are the called what atomic mass then we will discuss what molecular mass what in by molecular mass we can say what in by molecular mass means what the sum of the number of atomic masses present in a molecule the sum of the what number of atomic masses present in an what molecule clear that means consider what water ro molecular mass hame kemti काढिबा the sum of the atomic masses all the elements present in a what molecule that means how much number of hydrogen is present 2 number of hydrogen that means 2 into atomic number of hydrogen is what 1 plus oxygen how much number of oxygen atom is present 1 number of oxygen atom that means 1 into atomic mass of oxygen is what 16 that means we get what 18 u is the what this is called what unified mass which mass unified mass is the standard unit of the what molecular mass or atomic mass clear
another is called what? AMU. AMU means what? This is called atomic mass unit. Clear समझते? Next we'll discuss equivalent mass. Equivalent mass means what? What in by equivalent mass? Equivalent mass, how can you calculate equivalent mass? Equivalent mass is the sum of what? How can say? Yes, how can say what in by, how can you calculate equivalent mass? Okay, equivalent mass means what? Molecular mass. How can you calculate equivalent mass? Equivalent mass is what? Equivalent mass is the what? Molecular mass. Molecular mass divided by what? Valency. Divided by what? Valency. Molecular mass, consider we take oxygen. Okay. The atomic number of oxygen is what? 8. The atomic mass is what? 16. That means 16 divided by valency of oxygen is what? 2. That means we get what? 8. 8 is the equivalent mass of the what? Equivalent mass of the what? Oxygen atom. Clear? Clear समझते? Similarly, we take another example, equivalent mass of sodium. Consider equivalent mass of sodium. That means molecular mass divided by valency. Molecular mass of sodium is what? What is the molecular mass of sodium? 23 divided by the valency is what? 2. Then we get what? What? You can say valency of sodium how much? 1, not 2. Very good. Clear? Then we get what? 23. 23 is the what? Equivalent mass of the what? Sodium. Clear समझते? Clear? चलो एबे आमे डिस्कशन करिबा कोन? एबे आमे जीवा क्वेश्चन नंबर 1 को. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहूची. क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहूची? What is the mass of the hydrogen atom in terms of atomic mass unit? What is the mass of hydrogen atom in terms of atomic mass unit? What is the mass of hydrogen atom in terms of atomic mass unit means what? 1 gram of hydrogen atomic mass is how much? 1.673 into 10 to the power 24 gram. Okay, and 1 atomic mass unit is how much? 1.660 into 10 to the power 24 gram. That means subtracting this, then we get what? Okay. केते पाइबा? के कहबो? Okay. তাহলে এটা কত হবে? What is the mass of the hydrogen in terms of atomic mass unit? 1.0080. This is called atomic mass of unit of hydrogen atoms in terms of atomic mass unit. Clear? चलो next question. Clear समझते? Next question होची calculate the average atomic mass of nitrogen in the presence of atmosphere. Calculate the average atomic mass of nitrogen in the presence of atmosphere. जो मैंने कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी काइंडली पचार डाउट मत मेसेज ड्रॉप कर मेसेज रिप्लाई देवी बुझीगला. तो मैक्सिमम समस्त लाइव आसवा दरकार. आ जो मैंने भी लाइव अच्छे तो फ्रेंड्स मान को शेयर कर लिंक समस्ते जॉइन है समस्ते जाना दरकार जे एलटीआर मेन्स एग्जाम कौन क्वेश्चंस आसूची कौन एनालिसिस होची कौन टॉपिक वाइज कवर होची सेटा समस्ते जान बुझीगला. तो ओके ओके चलो क्वेश्चन होची कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, द गिवन डाटा इज व्हाट? The given data is what? Isotope is given. Another is what? Abundance is given. Another is what? Atomic mass is given. Clear? So who can say what in by isotope? First, what in by what? Isotope. Isotope means the elements which having same atomic number, same what? Atomic number, but different what? Mass number. Different mass number. बुझीगला. ताले गोटे एग्जांपल मुने भी element hydrogen 1 another is element hydrogen 1 2. That means the element which having atomic number both are the atomic number is same but the mass number is what? Different. Consider we know how can you define the mass number, atomic number and name of the element. Consider x is the what? Name of the element, z is the atomic number, a is the what? Mass number. How can you calculate mass number? Mass number is equal to what? Mass number is equal to number of protons plus number of neutron, and z is the what? Atomic number. Z is equal to what? Number of proton equals to what? Number of electrons. Yes or no? So how can you calculate? And x is called what? Name of the element. X is called what? Name of the element. X is name of the element. Z is the what? Atomic number. Atomic number. And A is the what? Mass number. Is the what? Mass number. Clear समझते? This is the written form of the what? Define of the what? Element. Name of the element, atomic number and mass number. Clear समझते? चलो क्वेश्चन कहूची
आम जानिले आइसोटोप कौन सिमिलरली आइसोबार मीन्स द एलिमेंट्स व्हिच हैविंग व्हाट सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर बुझीगला फॉर एग्जांपल आम नहीं कौन आइसोबार रे कौन एग्जांपल नहीं जिबा आइसोबार रे कौन एग्जांपल नहीं जिबा आर्गन एंड पोटेशियम आर्गन के 18 एटॉमिक मास के 40 पोटेशियम इज 19 एटॉमिक मास इज 40 दैट मींस मास नंबर इज सेम द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट दिस इज कॉल्ड व्हाट आइसोबार क्लियर क्लियर समझते नेक्स्ट किंतु तुम आरएचटी रे जो एबे एग्जाम हेची प्रीवियस एग्जाम रे तुम 2023 रे जो एग्जाम हेची सेते क्वेश्चंस आसी जे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ऊपर क्वेश्चन आसी कोथुर बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तुम्हें जानिया पड़ो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस अनदर इज व्हाट isotone another is what isotone means what hidden by isotone you can say hidden by isotone कि कोई परिबा isotone कौन होबो you can say hidden by isotone you can say hidden by isotone means isotones means the elements which having same number of what neutrons same number of neutrons this is called what isotones बुझेला तो for example we take hydrogen 1 3 and helium what 2 4 how can you calculate neutron we know what a is equal to number of protons plus number of neutron let minus कर दबा केते हो यार केते हो 2 यार केते हो 2 यार भी केते हो 2 बुझेला तो number of how can you find the number of neutron बुझेला this is called isotone similarly questions आसीबो कोन isoelectronic species what in by isoelectronic species the species which having same number of electrons this is called isoelectronic species बुझियला समझते isoelectronic species means the elements or the species which having same number of electrons consider मु example नेबी कौन magnesium lose 2 electrons then magnesium charge will be what mg2 plus is the valency of what magnesium valency means what the combining capacity of an element केतरा इलेक्ट्रॉन से देई परिबो केतरा इलेक्ट्रॉन से नहीं परिबो बुझियला तो सिमिलरली मु नेबी सोडियम Na+ सोडियम व्हाट लो जो 1 इलेक्ट्रॉन दे द चार्ज ऑफ द सोडियम इज व्हाट Na+ बुझियला तो एटा केमती Na+ फॉर्मेशन होबो ना लूज 1 इलेक्ट्रॉन दे सोडियम फॉर्म व्हाट Na+ that means in this case if the atomic number of magnesium is 282 that means magnesium lose 2 electron then charge of the magnesium becomes what mg2 plus that means the total number of electron configuration is of magnesium is what 28 similarly in case of sodium atomic number is what 11 the electronic configuration is what 2 8 1 that means in outermost electron sodium lose 1 electron then the electronic configuration becomes what 2 8 that means both the magnesium and sodium the total number of electrons is electronic configuration is 28 and sodium also what 28 that's why the species which having same number of electron that means isoelectronic species बुझियला तो isoelectronic species clear समझते the species which having same number of electrons is called isoelectronic तो ऑप्शन रे दे दबो एबीसीडी चारटा ऑप्शन कर दबो चारटा ऑप्शन रे से दे दबो कोन ए स्पेसीज कंबाइन गुटे दे दबो कि गुटे मॉलिक्यूल दे दबो ताको चेक करबा कोन तार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केतरा बुझियला तो सेटा को जाय कोन कह जाए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्लियर तो एबे हमें क्वेश्चंस करिबा क्वेश्चंस कोन पचारछि क्वेश्चंस कोन कहिछि ना कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आइसोटोप दे देछि एटा आइसोटोप दे देछि अबंडेंस देछि एटॉमिक मास गिवन अछि बुझियला तो आमे केमती काढिबा एवरेज एटॉमिक मास ना एवरेज एटॉमिक मास equal to what abundance of the isotope abundance of the what isotope into what atomic mass बुझेला तो ताले abundance of the isotope केते अछि 99.69 into 14.0031 plus केते अछि 0.39 into 15.001 that means we get the what 14.007 atomic mass unit. This is called
This is called what? Average atomic mass of isotope of what? Nitrogen. The option A. Clear समझते? Clear समझते? जो मैंने देखुच एबे लाइव अच्छो से मैंने काइंडली लाइक करो आउ चैनल को सब्सक्राइब करो आउ एज पर एज पॉसिबल जेते सांग अच्छी कौन करो शेयर करो बुझेगा तो कहीं आमको भी खुशी लगे पढ़ाई जोश आसो समस्त गोटे मिसिक गोटे एनवायरमेंट रही बुझेगा तो क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए सैंपल ऑफ कार्बन कंटेन 90% ऑफ कार्बन 12 एंड 10% ऑफ कार्बन 14 व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल बुझेगा तो केमती काढ़ा आगनी कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल ना एठी दे देछि एठी देछि कोन एठी गिवन डाटा अछि कोन ए सैंपल ऑफ कार्बन कंटेन्स व्हाट 90% ऑफ व्हाट कार्बन 12 एंड 10% ऑफ व्हाट कार्बन 14 दैट मीन्स आइसोटोप कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आइसोटोपिक फॉर्म रे अछि से पचारि छि कोन व्हाट इज द थिंग ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस कार्बन बुझियला तो ताले हम केमती काढिबा आगो काढि दबे इंडिविजुअल कार्बन आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 और कार्बन 14 ताले कार्बन 12 ले केते हबो 12 into 90 divided by 100 आउ गोटे केते हबो 14 into केते 10 divided by केते 100 बुझियला तो ताले एटा कैंसिल आउट हो गेला केते हिजो एटा 0 0 कैंसिल हो जिवो केते हबो 4 54 divided by what 5 एटा केते आसी कैंसिल 4 आसी गेला 1.4 बुझियला तो केते आसीबो की कहबो हां ताले एटा देखो एटा केते होची 0 0 कैंसिल हो गला एटा केते 5 2 सॉरी एटा 2 हो 2 5 जे 7 ठीक अछि एटा क्वेश्चंस रे रंग अछि बुझियला तो क्वेश्चंस रे कोन अछि 90% देछि कन अबंडेंस परसेंटेज रे केते हिजो जदि हम करबा 12 into 90 divided by 100 तो 0 कैंसिल एटा केते हो 212 2 54 by 5 54 by 5 वाला केते हो वैल्यू आसीबो डेसिमल वैल्यू को रंग हे जो गोटे काम करो क्वेश्चन टाको नहीं जाओ केते ना 90% अच्छी ताको नहीं जाओ केते 70% ये केते अच्छी 10% ताको नहीं जाओ केते 30% बुझेला तो ताले ए सैंपल ऑफ कार्बन कंटेंट्स ताको नहीं जाओ 70% ताले केते हो 12 to 70 डिवाइडेड बाय केते 100 एनादर केते बाहरिबो 10 into 30 डिवाइडेड बाय केते 100 बुझेला तो एटा केते हिजो हां केते हो सॉरी 14 into 30 केते हो ताले 4.2 एटा केते हिजो 8.4 ताले केते हिजो एटा 12.6 हेले केते ऑप्शन डी 12.2 अछि एटा केते लिखि दबो एटा 12.6 होला एटा कर दबो केते 12.6 चले आसो 12.6 बुझियला ताले सैंपल ऑफ कार्बन कंटेन्स दैट 70% कार्बन एंड another is what 30% carbon 14 what do you think the average atomic mass means बुझियला समस्त को क्लियर समझते क्लियर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन केते कर 14 बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन पचार कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सुक्रोज तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सुक्रोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दी सुक्रोज केते C12H22O11 बुझियला हम काढिबार अछि मॉलिक्यूलर मास केमती काढिबा ना सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड व्हाट मॉलिक्यूलर मास एटी केते अछि कार्बन 12 अछि ताले 12 into कार्बन रो एटॉमिक नंबर केते 6 एटॉमिक मास केते 12 प्लस ऑक्सीजन केते अछि 12 into केते हबो तो एटी केते नंबर ऑफ हाइड्रोजन अछि 22 नंबर ऑफ हाइड्रोजन that means what 22 into mass of hydrogen is what 1 plus how much number of oxygen present 11 into atomic mass of oxygen how much 16 then we get what 144
after the solving this, then you get what 342. You get what 342. 342 is the atomic mass unit of what? Atomic mass of unit of what? Sucrose. Clear समझते? Clear? Okay. चलो next question. Next question कौची एटा very interesting. Next question कौन कौची? Question कौची which of the following statements is correct? एटी बहुत important जिनस अच्छी. First statement कौन देची? That the solute that dissociate water have molar mass higher than the molar mass of the solute calculated theoretically. Next option कौन कौची? Solute that associate in water having the molar mass higher than the molar mass of the solute calculated theoretically. Next option C कौची? Solute that dissociate in water experience a decrease in colligative properties. Option D कौन कौची? Colligative properties are independent of the number of particles of the solute in the present solution. एटी हमें जानिया पड़िबो कौन colligative properties. What in by colligative properties? किए कहबो what in by colligative properties? What in by colligative properties? Colligative properties means what? किए कहबो? Yes, the properties which determine the what ratio of the amount of the solute substance in the solution to the what total number of the what solvent. This is called colligative properties, and colligative properties basically depends on the amount of the what solute substance. Colligative properties depend on the what amount of the solute substance. We can calculate when the solute in a solvent, when the association or dissociation takes place. Association or dissociation takes place. That means according to Vento factor, we have to calculate how the solute substance associate in a solvents, how the solute substance dissociation in a solvent. बुझीगला समस्त को ताले एटी आमे सब मन रख Vento factor केमती करा जाए ना Vento factor I is equal to what ना observed colligative properties observed colligative properties by what calculated colligative property कौन रहा बुझेल तो and observed colligative properties divided by calculated colligative properties, then we can calculate the what this is called what Vento factor. In colligative properties, what is the rule of Vento factor? Now when the solute substance that dissociates in a solvent, that means the Vento factor is always greater than equal to 1. बुझिएला when the word solid substance that dissociate in a solvent, then the Vento factor is always greater than equal to 1. That means I greater than equals to 1. When the association takes place of the solute substance in a what water molecules or solvent molecule, then we can say what Vento factor is less than 1. बुझिएला. And neither association nor dissociation takes place, that means we can say Vento factor I is equal to what 1. बुझिएला तो ओके क्लियर. तो आउ गोटे जिनस ये जानिक रख Vento factor रे कौन हुए ना डाइमर फॉर्मेशन भी हुए. कौन हुए डाइमर फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन. डाइमराइजेशन किए कहबो व्हाट इन बाय डाइमराइजेशन और डाइमर फॉर्मेशन किए कहबो व्हाट इन बाय डाइमराइजेशन और डाइमर फॉर्मेशन किए कहबो. Okay, dimer formation or dimerization means what? When the two molecules, this is called monomer. When the two molecules, this is called what? Monomer, that combine each other, then it forms a what? Larger molecule. This is called for dimerization. Then the process is called for dimerization. बुझिएला समझते clear. Dimerization means what? When the number of molecules called what? Or two number of molecules combine. This is called monomer. Then it forms a larger molecule. This is called dimer, and the process is called what? Dimerization. Clear समझ clear. यदि Vento factor I is equal to half हुए ताले से कौन फॉर्मेशन डाइमर फॉर्मेशन कौन करिवो डाइमर फॉर्मेशन. एटा मन रखी थाओ एग्जाम रे पड़ी पारे कहीं क्वेश्चन पचार दबो Vento factor I जदि 1/2 हुए ताले सेटा कौन कहै जिवो डाइमर कहै जिवो. कौन कहै जिवो डाइमर. जदि नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन हबो ताले ताको कौन कहै जिवो के कहबो नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन हेले कौन हबो नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन हेले Vento factor I is equal to 1 हबो. क्लियर.
जदि वेंटर फैक्टर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम ताले सेटा हमें कोन कहबा हां कोन कहबा सेटा dissociation very good जदि हमें कहबा वेंटर फैक्टर आई लेस देन इक्वल्स टू 1 देन दिस इज कॉल्ड व्हाट एसोसिएशन क्लियर से क्वेश्चन कोइ जे एटी कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द व्हाट करेक्ट एटी केमति जानिबा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट हमें जानि छे अकॉर्डिंग टू द what colligative properties we can find the association or dissociation relate with the what vector factor that means the solute that associates in water that means the molar mass higher than the molar mass of the solute calculated what theoretically that's why the option B is the what right answer option A is not possible and C is not possible and D is not possible clear that means association in water that means solutes that associate in water that means vector factor I is what less than 1 means this is the what that means what this statement is what correct बुझेला समझ तुम क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिचे हां एटी देखो एटी देइची कोन कहिची on association of solid molecules that number of particles in a solution is reduced since the colligative properties are directly proportional to the number of the what particles in a solution and the colligative properties is reduced then the molecular mass of the solid is inversely proportional to its colligative properties बुझियला ताले solute that associate at water of what higher what molar mass then it's what calculated value theoretically बुझियला समझते clear तो ओके जो माने एबे लाइव अच्छो सांग मान को टिके लिंक शेयर करो समस्ते जानिबा दरकार एबे कहीं ना एलटीआर मेंस एग्जाम आ समय ना आमको एबे टारगेट नबाक पड़ियो बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करि बारी छी टॉपिक वाइज हमें कवर अप करियो बुझियला तो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटर फैक्टर फॉर सॉल्यूट द डिसोसिएशन ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन के कहबो के कहबो के कहबो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटर फैक्टर फॉर सॉल्यूट द डिसोसिएशन इन वाटर दैट मींस व्हाट दैट मींस वेंटर फैक्टर is always greater than 1 that means this is what dissociation in water जदि less than होबो ताले सेटा कोन होबो associate but water बुझियला क्लियर समझते चलो नेक्स्ट वन इजी अछि ताले ऑप्शन कोन होबो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हां आउट बुझियला एडी ओडे इंटरेस्टिंग अछि कोन क्वेश्चन कहूची एडी जानिबा दरकार हम क्वेश्चन रे डिस्कस करले कोन वेंटर फैक्टर द डिसोसिएशन इन वाटर इज always is what greater than 1 and associated in water is less than 1 जदि हमें कहूचे neither association nor dissociation ताले example कोन होबो there the what urea another is what glucose another is sucrose what is the formula of urea NH2 CO what NH2 the glucose is what C6 H12 O6 and sucrose is what C12 H22 O11 बुझिला तो ताले यूरिया क्वेश्चन ऑप्शन दे देथो यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज अदर ऑप्शन दे देथो आ चारिटा एलिमेंट्स ऑप्शन दे देथो कि मॉलिक्यूल्स ऑप्शन दे देथो से पचारिबो व्हिच वन शोज व्हाट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द वेंटर फैक्टर जदि नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन ताले सबले जानिबो जे यूरिया एंड ग्लूकोज एंड सुक्रोज दे ऑलवेज वेंटर फैक्टर इक्वल टू व्हाट 1 बुझियला क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोची इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल द वेंटर फैक्टर द सॉल्यूट बी लेसर देन 1 बढ़िया क्वेश्चन के कहबो चैनल को टिके समस्त सब्सक्राइब करो लाइक करो आउ टिके शेयर करो बुझिला तो ओके ओके क्वेश्चन कहूची कोन in which of the following solution will the vector factor the solute be lesser than 1 lesser than 1 means what and the vector factor k lesser than 1 शो करिवो केमति जानिबा the solute particle that associate in 1 associate 1 हले त कोन होबो vector factor कोन होबो
कौन हम हाँ बेंटो फैक्टर कौन हम जदि कौन हुए सॉलिड सब्सटेंस दैट एसोसिएट इन वन दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड व्हाट द बेंटो फैक्टर इज व्हाट लेस देन वन दैट मीन्स आई लेस देन वन यदि डिसोसिएशन हो ग्रेटर देन वन सोडियम क्लोराइड इन वाटर दैट मीन्स द बेंटो फैक्टर इज व्हाट लेस देन वन the vento that means in this case it dissociate into what two ions that means what Na plus another is what Cl minus बुझेला तो that means in this case the Vento factor of the solute will lesser than 1 and this benzene in benzoic acid in benzene acetic acid in benzene and phenol in benzene they are the form what dimer so these are the not possible to formation of the solute be lesser than 1 that means only sodium chloride in water which can form the Vento factor solute be what less than 1 clear sir that's why the option 1 is the right answer clear chalo next question the question पचारछि the depression of freezing point of a solution of acetic acid in benzene is 0.2 degrees Celsius if the molality of acetic acid is 0.1 mole then find the ratio of the normal mass to the abnormal mass एटी देछि कौन देछि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड केते देछि 4 डिग्री सेल्सियस ओके कहले के होबो आंसर कोन होबो कहलो के कहबो के कहि परिबो एटा आंसर केमती काढिबा हमें जगन्नाथ साहू गुड आफ्टरनून ओके केमती जानिबा के कहबो आमे जानिचे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depression of the freezing point that means del T is equal to what I into kf into what m yes or no फॉर्मूला पढ़िछो कि नहीं yes ताले डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट हम केमती काढिबा डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एटी दे देछि del T रो वैल्यू केते देछि गिवन 0.2 डिग्री सेल्सियस हो ना नहीं अरे हो ना नहीं एटी मोलालिटी ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन केते दे देछि मोलालिटी केते दे देछि molality of CH3COH acidic acid solution is how much केते 0.1 मोलल होना नहीं and freezing constant K value केते दे दीची 4 डिग्री सेल्सियस बुझियला then put the value get the answer value केमती पुट करिवा हमें 0 एड value पुट करो del T is equal to केते 0.2 is equal to what I and Vento factor is what I into physics constant कहते 4 बुझेला तो into कहते 2 डिग्री सेल्सियस 0.2 बुझेला नहीं अरे बुझेला ना नहीं हाँ डेल्टी पाई गलो डेल्टी कहते दे 0.2 डिग्री सेल्सियस मोलालिटी ऑफ द एसिडिक एसिड कहते दे दीची 0.1 मोलाल into कहते फ्रीजिंग कांस्टेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट कहते 4 डिग्री सेल्सियस ताले वैल्यू पुट करियो कहते 1 बुझेला तो ताले Vento factor I काढिबा केमती काढिबा के कहबो yes के कहबो वेरी गुड के देबो 0.5 मोलार वेरी गुड बुझेला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर समझते बुझेला तो yes बुझेला दैट मींस एटी दे दीची केते depression in freezing constant is how much del T is equal to I into kf into m I is the what Vento factor kf is the freezing constant and m is the what molality of the solution that means हमें वैल्यू दे दीची del T केते 0.2 एटी कौन दे दीची I तो कौन दे दीची Vento factor led with the Vento factor I and 4 is the what freezing constant depression constant और freezing constant ताको कौन कहते depression constant into केते 0.1 मोलर ताले वैल्यू पुट करिबा ताले हमें केते पाइबा 0.1 क्लियर समझते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution should have the least boiling point वेरी इंटरेस्टिंग हमें केमती चेक करिबा एटा लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट के कहबो क्वेश्चन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शुड हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ओके
केमती करिवा ना according to the Venter factor when the substance this substance when dissociate in what solvent then it dissociate into two ions, one is what K plus, another is what OH minus. That means Venter factor I is equal to how much 2. In this case it dissociate into two ions, 2 NH4 plus what SO4 2 minus ions. That means the Venter factor I is equal to what 3. That means ammonia is present, the stoichiometric coefficient of ammonia is 2 moles, another is what sulfate is what 1. That means the Venter factor I is equal to what 3. And K2CO3 potassium dichromate, then it is dissociated into 2 ions, this is what 2K plus what CO3 2 minus ions. That means the Venter factor I is equal to what 3. And K2SO4, then it forms what 2K plus what SO4 2 minus, the Venter factor I is equal to 3. That means the lesser number of Venter factor present forms in the solution when dissociated into ions, then it shows the what least boiling point. बुझिएला, then it shows what least boiling point. That's why the option 1 is the what right answer. Clear समझते? Clear? चलो जो मन को डाउट होची काइंडली तुम कमेंट्स कले मु जानी परिबी जे कोठी क्लियर हे परनो कोटा डाउट रोची, मु क्वेश्चन अगेन रिपीट करिवि, नो प्रॉब्लम. यू एवरीबॉडी यू हैव टू कॉन्सेप्चुअली क्लियर ऑल द थिंग्स. ओके आ जो मैंने एबे लाइव अच्छो से मैंने वीडियो को काइंडली लाइक करो, सब्सक्राइब टिके करो, आ जो सांग माने अछंती शेयर कर. बुझिलो तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि ने एसिडिक एसिड एसोसिएट एज ए डाइमर बेंजीन. Dimers benzene, short question mon rakhita. Dimer is the benzene form or dimers. What is the Venter factor of I, the degree of association of acetic acids? केमिति काढिबा के कहिबो? हां के कहिबो? आकुनी calculate the Venter factor I, the degree of association of acetic acids when the acetic acids associates dimers in what benzene. के कहबो? सत्य प्रकाश क्लियर अच्छा तो कौन हम एटा आंसर सत्य प्रकाश के कहबो? ओके आंसर कौन केमती जानिबा आमे solute association in the solution. That means the Venter factor I रे फॉर्मूला होची कोन ना I is equal to 1 plus 1 by n into minus 1 into what alpha. I is equal to 1 plus 1 into whole into what 1 by n minus 1 into what alpha. बुझेला तो तमे वैल्यू पुट करियो आमे पाई जाइथिले कोन ना 1 plus 1 by 2 minus 1 into 0.5. 0.5 आमे केमती पाइले ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा केते दे देथिला ना 50%. 50% को कन्वर्ट करला आमे केते पाइबा 0.5 and the number of molecules of associated n is equal to how much 2 and the Venter factor is what I. So we know that the solute that association in solution, the formula is what? Yes or no? I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into what? Alpha. Alpha is the what? Degree of association. Value put करिबा ताले 1 plus 1 by 2 minus 1 into 0.5 दला आंसर केते पाइबा 1 minus 0.5 into केते 0.5 1 by 2 केते 0.5 then you get what 0.75. 0.75 is the what? Venter factor of what? Venter factor of what? Acetic acids. Degree acetic acid in the what? Degree of association to the what? Benzene. That means what? Option C is the right answer. Clear समझते? Clear? चलो next question. हाँ जदि पचारि पारे एटा दे देला एसोसिएशन दे देला सॉल्यूशन रे जदि हमको एग्जाम रे क्वेश्चंस पचार दबो कोन ना डिसोसिएशन कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला डिसोसिएशन पई कोन ना I is equal to 1 plus alpha into n minus 1. I is equal to what? 1 plus alpha into n minus 1. This is the called what? Dissociation calculated using the formula. बुझेला when solute particle or solute substance dissociate in a what? Solvent, then the dissociation is calculated using the formula I is equal to 1 plus alpha into n minus 1. Clear? चलो next question. Next question is what? Now what is the number of entities of particle together in a mole concept known as dash? Question पचार देछि what is the number of entities or particles together in a mole concept known as dash? What? कौन कहबा केमती जानिबा
କିଏ କହିବ? କିଏ କହିବ? yes Avogadro's number कौन? Avogadro's number yes Avogadro's number कौन? Avogadro's number is denoted is what symbol what Na. Avogadro's number is what 6.022 into 10 to the power 23 particles. 23 particles. बुझेला? These particles may be ions. These particles may be what? Molecules. These particles may be what? Atoms. बुझेला? These particles may be ions ही पारे, molecules ही पारे, बा atoms ही पारे. That means we can using the Avogadro's number Na is equal to 6.022 into 10 to the. And another is this is the right answer. And you have to know what in by Bold's constant. Bold constant केमती यूज करे जाए? Bold constant Kb is equal to what? Kb is equal to what? Rho by this is R is the what? Universal gas constant. R is the what? Universal gas constant divided by Avogadro's number Na. बुझीगला? Universal gas constant R रो value केते? R रो value केते? 8.314 joule into Kelvin inverse into what? Mole inverse. बुझीगला? Divided by Avogadro's number how much? 6.022 into 10 to the power 23. Clear? Mole inverse. ताले हम एटी केमती काढिबा ता value ना 1.38 what? Kelvin inverse joule into what? Kelvin inverse what? Mole inverse. बुझीगला? बुझीगला तो आउट होची रेनॉल्ड्स नंबर कोन? रेनॉल्ड्स नंबर होची Re. रेनॉल्ड्स नंबर केमती बारे ना रो into Vd divided by what? Mu. रो into Vd divided by mu. रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स कांस्टेंट कोठी यूज हुए? द रेनॉल्ड्स कांस्टेंट रो यूजेस होची कोन? ना इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द velocity, another is what? Density, another is what? Viscosity of a what? Fluid. गोटे फ्लुइड रो viscosity, density आ velocity को मेजरमेंट करिया पई जोटा यूज करे ता कहते रेनॉल्ड्स कांस्टेंट बा रेनॉल्ड्स नंबर. बुझियला तो रेनॉल्ड्स कांस्टेंट आर रो इज द व्हाट? रो इज व्हाट? हाँ रो इज व्हाट? v रो के कहबो? व्हाट इज रो? व्हाट इज रो? This is called what? Density of a what? Fluid. Density of a fluid. And v is the what? Velocity of a fluid. And d is the what? Diameter. And mu is the what? Viscosity. Clear? चलो next question. Next question कुछ है mole of any substance contains dash. A mole of any substance contains dash means this is the word Avogadro's number 1 mole. First you have to know what in by mole. Mole or mole concept means what? Yes or no? This is the most important topic. Mole or mole concept means what? Mole concept is used it is the unit to measure the what? Quantity of a what? Substance. Substance रो quantity को measurement करिया पे mole concept use. Mole concept रे 1 mole means what? 1 mole रो value केते 6.022 into 10 to the power 23 particles. माना नहीं आता को अब कौन कह जाए ना Avogadro's number भी कह जाए. Already discussed previous question. ताले एटी को answer is the right answer? Option C is the right answer. 6.022 10 to the power 23 particles. Already discussed मु कहिची particles कौन ही पारे ना atoms ही पारे नले कौन ही पारे ions ही पारे नले कौन ही पारे molecules भी. बुझियला? चलो next question. Next question, if 1 mole of ammonia contains y number of particles, then how many particles do 1 mole of glucose contains? Very interesting question. 1 mole of ammonia contains y number of particles. Then how many particles do 1 mole of glucose contains? 1 mole of ammonia केते दे दीची? 1 mole of ammonia NH3 contains केते particles ना y particles. बुझियला? से कोइची 1 mole of similarly 1 mole of केते ना glucose C6H12O6 contains how much? Similarly कौन होबो?
y number of what particles, yes or no? जदि 1 mole of ammonia contain करूची केते केते y particles, ताले 1 mole of glucose contain करियो केते y particles. No 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 मिक्की not option C, no option C होबो नाही. जदि कोई 1 mole of ammonia contains करूची केते y number of particles, then how many particles do 1 mole of glucose contains? के कहबो? Yes, option D is the right answer. बुझियला? गुड आफ्टरनून मिकी. बुझियला समस्त क्वेश्चंस क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is what is the number of particles in 10 moles of hydrochloric acids? 10 moles of hydrochloric acids. How can you find the number of moles of hydrochloric acids? How can you find? Yes, 10 into, how can you find? 10 into 6.022 into 10 to the power 23. This is the what? 1 mole of the particles. That means how much given data? Na 10 moles of what? Hydrochloric acid is given. That means we have to multiply 10 into a what? 1 mole. Then we get what? 6.022 into 10 to the power 24 particles. Okay, there is not option given. You write the option E. 6.022 10 to the power 24 particles. Clear समझते? Clear? LTR सर LTR रे एते कष्ट क्वेश्चन. LTR रे क्वेश्चंस RST रे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिलेट करी हमें क्वेश्चंस करियो. क्वेश्चन टिके टॉप आसुची. हमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल टॉप को नेले ब्रीफ नॉलेज डिस्कशन करवा विथ क्वेश्चन रे जहाँ कॉन्सेप्ट आसीबो मु सब कॉन्सेप्ट क्लियर करिवि. आ जो माने इंटरेस्टेड भी होबो हमर थियोरी क्लासेस जॉइन करिया पई हला थियोरी क्लासेस रे नंबर दिया हिची तळे से नंबर रे कांटेक्ट कले हम जानि जिवो थियोरी क्लासेस पेड बैच रे केमती कोन रहउची कोन कोर्स भी रहउची से हिसाब रे थियोरी क्लासेस फुली डिस्कस हे. बुझेला तो? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 mole of sucrose contain how many grams of sucrose? 1 mole of sucrose contain कि मोर हबनी सर हबनी कहीं की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं. LTR प्रीलिम्स क्लियर हिची माने मेंस को टारगेट करो हमें केमती क्लियर करिवा. बुझियला तो? टारगेट रे चलो हबनी कहीं की हबो. ओके 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 क्वेश्चन होची 1 mole of sucrose contain how many grams of 1 moles of sucrose contain how many grams of what sucrose? बुझियला तो? केमती जानिबा? हमें जानिचे 1 mole of केते ना 6.022 into 10 to the power 23. एटी कहिची ना 1 mole of sucrose contain how many grams of sucrose? हमें जानिचे sucrose रो molecular mass केते 342 gram. That means 1 mole of sucrose contain how many grams of sucrose? 342 gram of sucrose. बुझियला तो? molecular mass of sucrose केमती काढिबा? ना sum of all the what atomic mass of elements present in a what atom. बुझेला? sum of all the atomic masses of the elements present in an atom or molecules, then we can find the what molecular mass. बुझेला? So clear? Option A is the right answer. Clear? Next question. Next question कौन कहूची? Next question कहूची 1 mole of ammonia is 1 mole of ammonia. 1 mole of ammonia is how much? No 17 gram. 1 mole of ammonia NH3 केते दे देची 17 gram. बुझियला? से क्वेश्चन पचारची then what is the mass of 0.3 moles of ammonia? What is the mass of 0.3 moles of ammonia? एमिति मिकी कौन कहूछ बुझेउनी एक्चुअली मेसेज टा क्लियर मु जानि परनी. ओके क्वेश्चन कहूची 1 mole of ammonia is 17 gram, then what is the mass of 0.3 moles of ammonia? केमती करिवा? 17 into 0.3 moles of what ammonia, then we get what 5.1 gram. This is called what 5.1 gram. That the 5.1 gram is the what 1 mole of ammonia. Then what is the mass of the 1 moles of 0.3 moles of ammonia? This is the answer is the what B. B is the
राइट आंसर बुझीगला समस्त को क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ 4 gram equivalent mixture of sodium hydroxide and Na2CO3 contains x gram of sodium hydroxide and y gram of sodium carbonate. Then the value of x is dash gram. How can you find? मरीजीवी मु सर एमती अरे मरीजीव कहीं करीड कौन पाई प्रिपेरेसन कर फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस जड़े कही किसी तो किसी अच्छी बोली तो कही ना नहीं ताମାନେ जे फेलियर हम तापर सक्सेस हम एबेटू वर्क कर एवरीडे गोटे रुटीन बन रुटीन हिसाब से पढ़ ऑटोमेटिकली सक्सेस मनीष ही सक्सेस करेंगे ना किए कर आम द्वारा ही सब किसी पॉसिबल बुझेगा तो क्वेश्चन कही कौन ना 4 ग्राम इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स व्हाट x ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड y ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट बुझेगा तो क्वेश्चन हूँ कौन ताला हम केमती करवा दे देछि कौन मिक्सचर दे देछि कहार ना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सोडियम कार्बोनेट व्हाट Na2CO3 Na2CO3 तार मिक्सचर केते दे देछि 4 ग्राम बुझीगला तो बुझीगला कंसीडर सोडियम हाइड्रोक्साइड को आम कंसीडर करवा कौन ना ए मोल एंड सोडियम कार्बोनेट को कंसीडर करवा कौन A' मोल बुझीगला क्लियर इन दिस केस सोडियम हाइड्रोक्साइड केते देछि ताकू कंटेन्स केते ग्राम ना x ग्राम एंड सोडियम कार्बोनेट A' मोल केते ग्राम दे देछि y ग्राम ताले हम केमती काढिबो ताकू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज केते 40 यस और नो एंड सोडियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास केते 106 हाँ ना नहीं ताले केमती काढिबा ना 40 A प्लस what 106 A dash equals to how much 4 gram बुझेला that means केते हो 146 to A equals to what 4 gram बुझेला तो clear that means A equals to केते हो 4 divided by 146 कहार काढिया पई कोची सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्वेश्चन पचाछि द वैल्यू ऑफ x रो मॉलिक्यूलर मास केते दे देछि 40 इंटू केते हो 40 बुझीगला तो सॉरी 40 काढ आंसर केते हो सॉल्व करो एटा अरे आंसर केते हो के कहबो केते हो लिखिछि सार क्लास केते केतेटा 12:30 रे तुमरो केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होची 12:30 रे तुमरो डेडलाइन टा होची केमिस्ट्री क्लास रो डेडलाइन तुमरो केमिस्ट्री क्लास रो कहि दोची मोर केमिस्ट्री क्लास रो डेडलाइन रहबो कोन मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रे हमें 12:30 रे क्लासेस हो ओके एटा सॉल्व करो केते हो के कहबो के हो B here B is the right answer here yes or no hmm okay okay yes very good B is the right answer बुझेला तो चलो पढ़ो 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मिके कैलकुलेशन मिस्टेक करछो ऑप्शन सी कोन हो राइट आंसर हो ओके एटे गिवन अछि एटे दे देछि सोडियम हाइड्रोक्साइड केते दे देछि A मोल सोडियम कार्बोनेट A' मोल and weight of the sodium hydroxide plus weight of the sodium carbonate is 4 gram this is the given value for 40A plus 106 is equal to 4 gram and A is equal to 4 by 146 into 40 then we get what
1.095 that means nearly equal to 1 केते आछी एटा 1 ग्राम आछी रे मिकी एटा 1 ग्राम आछी नॉट ऑप्शन सी ऑप्शन बी दुईटा जाक रंग बुझीला तो ए डिवाइड करके चेक करो डिवीजन भूलभाल कैलकुलेशन होउची बुझीला तो वैल्यू केते आसीबो हां 1.095 that means nearly equals to 1 option A is the right answer चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूँ मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन गिव 9.2 ग्राम ऑफ टोलुइन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ टोलुइन मिथाइलेशन मिथाइलेशन मीन्स व्हाट ऑलरेडी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे पढ़ीच फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन आ गोटे कौन पढ़ीच फ्राइडेल क्राफ्ट आसाइलेशन फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रे कौन हुए ना अल्काइल हैलाइड दिया जाए कौन दिया जाए अल्काइल हैलाइड आइसोलेशन रे कौन हो जाए ना एसिटाइल क्लोराइड कौन दिया जाए एसिटाइल क्लोराइड बुझीला तो बा एसिटाइल हैलाइड बुझीला तो फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रे कौन हुए ना अल्काइल हैलाइड दिया जाए फ्राइडेल क्राफ्ट आइसोलेशन रे कौन हुए ना एसिटाइल क्लोराइड दिया जाए बुझीला तो ये कहूँ मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन गिव 9.2 ग्राम ऑफ टोलुइन ताले मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन मीन्स व्हाट C6H6 react with methylation of benzene with what with CH3Cl in presence of what anhydrous AlCl3 then it gives what toluene that means C6H5 CH3 plus what HCl or we can write like this is the benzene react with what CH3Cl alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3 this is gives what toluene benzene ring this is gives what toluene CH3 plus what HCl clear सेठी क्वेश्चन पचार देछि कोन क्वेश्चन कोन पचार देछि क्वेश्चन कहिछि कोन ना मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन रो मॉलिक्यूलर मास केते 78 बेंजीन रो मॉलिक्यूलर मास केते 78 देखो बुझो भलो से बुझो कही मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन गिव 9.2 ग्राम ऑफ टोलुइन मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन अब तुम जानिच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिथाइलेशन बा कहते अल्काइलेशन अल्काइलेशन कौन ना फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन बा फ्राइडेल क्राफ्ट एसाइलेशन फ्राइडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन माने कौन कौन अल्काइल हैलाइड दिया जीवो आसाइलेशन माने कौन दिया जीवो एसिटाइल क्लोराइड दिवो बुझिला तो अल्काइल हैलाइड देले कौन हबो अल्काइल हैलाइड देले कौन दबो टोलुइन दबो कौन दबो टोलुइन जदि आम एसिटाइल क्लोराइड दबो ताले से कौन दबो एसिटोफिनोन कौन दबो एसिटोफिनोन बुझिला तो एटी कहिछि केते बेंजीन रो मॉलिक्यूलर मास केते 78 केते मिथाइलेशन रे बेंजीन केते ग्राम अछि 10 ग्राम दैट मींस 10/78 बुझिला तो ओके टोलुइन रो मॉलिक्यूलर मास केते 92 केते मोल अछि हैं कौन कहू मिकी एमिति पढ़िले मो घरे मैरेज करदे अरे पाठ पढ़ मैरेज कथा पर अच्छी आग चाकरी तो सेटल हो जाओ लाइफ टा आग सेट कर दियो मैरेज करने बहुत टाइम अच्छी बुझीगला तो हाँ ना नहीं हाँ ताले केते हबो एटा हाँ केते हबो मेसेज कौन अच्छी सर आपण आंसर आगो आंसर एटा कौन हबो को केमती काढिबा ओके ताले एटा केते हबो ताले 10 ग्राम देछि 10 ग्राम ऑफ केते करूची मिथाइलेशन हेले कोन होची टोलुइन फॉर्मेशन होची टोलुइन रो केते 10 into केते 92 देले केते हबो 920 हना नाही ताले हम केमती काढिबा ना 9.2 डिवाइडेड बाय 920 into 78 टू व्हाट 100 डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करिया पे तळे मल्टीप्लाई करिया केते 10 एटा वैल्यू केते आसीबो 78% आंसर ए इज द राइट आंसर बुझियला
सी केमती हम रे आंसर सी हम ना कैलकुलेशन चेक करो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी बाय द 240 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी ऑक्युपाइड बाय 240 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड केमती काढ़ा द वॉल्यूम ऑफ द gas at STP and NTP is what 22.4 liter 22.4 liter STP means standard temperature and pressure NTP means what normal temperature and pressure the volume of the gas and STP और NTP कहते 22.4 liter the question कही कौन calculate the volume of the STP occupied by 240 gram of sulfur dioxide केमती काढ़ा आमे जानिचे कौन आमे जानिचे कौन number of moles n is the number of moles that means n equals to small m by capital M small m is the what mass and capital M is the what molar mass this is called what molar mass बुझेला तो molar mass of sulfur dioxide कहते ना 64 ग्राम पर मोल molar mass of sulfur dioxide कहते 64 gram per mole that means we can calculate n is equal to n is the what given mass कहते होची 240 divided by 64 then we get what 3.75 mole yes or no so 3.75 mole is the what right answer option B is the right answer sir SSB TGT केबे आसीबो SSB TGT PGT दुईटा जगह बे न्यू वैकेंसी आसीबार बहुत चांसेस अछि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रु तुमर एसएसबी पीजीटी रे जो एग्जाम हेतला बे रिसेंटली सेतरे सीबीजेड पिलांक पई गोटे आसीतला पीसीएम पिलांक पई दुईटा क्वेश्चंस आसीतला कोन मो फर्स्ट चैप्टर कोन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रु आउ जो तुमर एलटीआर एग्जाम जो मानकर एबे मेंस हबो प्रोबेबली तुमर चांसेस अछि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन रु 8 to 10 क्वेश्चंस आसीबार प्रोबेबिलिटी अछि तो एटा को भलो से क्लियर हो चैप्टर बुझेला तो ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water calculate the mass percent of the solute mass percent of the solute केमती पाइबा आकुनी calculate the mass percent of the solute okay mass percent केमती पाइबा the mass of the given mass of the solute divided by total mass of the solution to what 100 this is called what mass percentage होना नहीं इसके क्रिएशन सर जी सेकेंड फेज भी आसीबो डेफिनेटली सेकेंड फेज भी आसीबो एबेडू तुमे रेगुलर क्लासेस एबे चलिबो एलटीआर मेंस पे केमिस्ट्री क्लास रेगुलर एबे चलिबो जो माने प्रिपेयर होचो या अपकमिंग एग्जाम भी एसएसबी पीजीटी आसीबार अछि भलो से ठीक अछि तो क्वेश्चन कहूची ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 gram of substance a solution is prepared by adding 2 gram of substance A in 18 gram of water that means 18 gram of water this is the what solvent this substance is what solvent substance and 2 gram of substance is added this is the what solute this is the what solute when we adding solute with what solvent then we get what solution that means solute plus what solute plus solvent then you get what solution yes or no the given mass of solute is how much 2 gram that means 2 gram divided by total number of solution what 2 gram plus what 18 gram into how much 100 that means 2 by 20 into what 100 then we get what 10% okay, very good 10% clear tala option A is the right answer बुझीला जूली सर इंग्लिश क्लास केबे हबो इंग्लिश क्लास एबे तमरो
कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया है कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर एबे सब क्लासेस रेगुलर चली एलटीआर मेन्स पई जदि किसी इनफॉरमेशन जानिबार अछि एबे रेगुलर क्लासेस रे टिके टचअप रुहो आउ जहाँ एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन अछि कॉन्टैक्ट नंबर अछि कॉन्टैक्ट नंबर टिके डिटेल्स जानबो ठीक अछि आउ दया करिके टिके चैनल को सब्सक्राइब आउ टिके लाइक आउ सांग मन के साथ टिके शेयर करो बुझियला तो ओके क्लियर समझते 10% इज द राइट आंसर बुझियला बुझियला तो समझत को हाँ ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 4 gram enough water to form 250 ml of the solution ये कोई वर्ड क्वेश्चन कोई कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द dissolving 4 gram to the water to form 250 ml of the solution बुझेला तो तालेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट डाटा इज गिवन अछि सॉल्यूट डाटा इज गिवन अछि सॉल्यूशन दिया है ना नहीं आमको काढ़िया कौन कही मोलारिटी काढ़िया कही मोलारिटी केमती कढ़ा किए कह मोलारिटी केमती कढ़ा मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बुझेला तो ताले सॉल्यूट केते दे देछि 4 ग्राम डिवाइडेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मॉलिक्यूलर मास केते 40 डिवाइडेड बाय केते ml अछि 250 ml माने नहीं ताले 0.250 लीटर मीटर को मिलीलीटर को लीटर को कन्वर्ट कर देले केते हो ताले केते हो 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 0.250 liter that means 0.4 mole inverse yes or no that means 0.4 molar yes or no 0.4 molar बुझेला तो ताले एटा केते हबो 0.4 molar ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बुझेला समस्त को माने बुझियलानी को जो माने को डाउट अछि पचारो जो माने को डाउट अछि पचारो मेसेज रे टिके बुझियला जदि येस लेखो जदि न बुझियला न लेखो आउथरे बुझेबी जदि भी डाउट अछि क्लियर समस्ते क्लियर अछो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो कंप्लीट हो जाइए कमिंग क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा मोल कॉन्सेप्ट रो आज मोल कॉन्सेप्ट रो जतियो क्वेश्चंस हला और जहाँ टॉपिक वाइज क्लियर हो जो माने भी एबे न्यू जॉइन करूचो क्लासेस को प्रॉपर्ली डेली बेसिस रे क्लासेस देखो कहने डेली बेसिस रे हमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा ठीक अछि एटी आमे आज जानिले कोन एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास और मोल कॉन्सेप्ट कमिंग क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैलकुलेशन बेस्ड स्टोइकियोमेट्री इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स एंड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्शन एटा होची बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक काहेकि कहूची मु एटा जानिया पे रखो जो आरएचटी एग्जाम हेतिला आरएचटी एग्जाम रे 11 टा क्वेश्चंस केवल एराइज हेची कोथरे ना पीसीएम पिलांको पई और 7 क्वेश्चंस एराइज हेची को पिलांको पई सीबीजेड पिलांको पई ओनली केमिस्ट्री क्वेश्चन तो ये चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट जो माने भी कॉन्सेप्चुअल क्लियर थ्योरी क्लास जानिया पे चाहूचो हमरो कांटेक्ट नंबर दिया है कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करो थ्योरी क्लासेस भी एवरीडे भी क्लासेस चलिबो थ्योरी क्लासेस विथ डाउट क्लियरिंग एंड कॉन्सेप्चुअल ओके थैंक यू समस्त को जय जगन्नाथ।